मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द सी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। थैंक यू। तेरी याद साथ है, किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। कहने को सच अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, बस याद साथ है। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं हर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। कोई नई दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई तो सब कुछ पाके भी ये मन ही मन कहता है। कहने को सच अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है। थैंक यू। Fantastic performance, Aditi. अंगना खोलते बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम सजना, अंगना खोल के
पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ये तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब अंगना फूल खिलेंगे। पापा सा सरे सा हाथों में है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों में दिल मिले तारे हैं, आने लगी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम सजना, तुम सजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना Thank you very much. अरे हेलो, पहले एक बार स्टार्ट कर लो हाथ में लेके, फिर उसका हाथ में लगा देना। सुनो, हाथ में लेके स्टार्ट कर लो, फिर लगा देना। हाथ में लेके स्टार्ट कर लो। Creativity and a positive mindset. And in skill building, we strive to enrich communication skills, emotional intelligence, teamwork, and social skills, all essential for shaping well-rounded individuals. Today's event is a reflection of all these continuous efforts, the learning in classroom, the teamwork on playground, the creativity in activity hall, and the dedication that flows through corridors of SIMS. We are here to celebrate a day filled with joy, pride, and togetherness. Dear parents, today's program is dedicated to your children who have worked tirelessly over past few weeks to make this day special and memorable. Our students are excited and ready to present their talent. Our teachers have guided them with immense love, patience, and dedication. So I request everyone to encourage them with your warm and cheerful applause. Today is truly a special occasion. Smart Indian Model School proudly presents its annual function, a celebration of creativity, discipline, learning, excellence, and above all, a happy childhood. We promise you a day full of engaging and mesmerizing performances.
knowledge, and light is a symbol of new beginning. May this divine light guide us and illuminate the path of every child with Martin Model School. I humbly request our respected Director Sir, Mr. Sharad Gupta Sir, our respected co-founder, Engineer Saurabh Gupta Sir, and our respected Deputy Director Ma'am, Mrs. Manjri Gupta Ma'am, to kindly come forward and grace the stage for the lamp lighting ceremony. मैं हमारे सभी माननीय अतिथियों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर पधार कर दीप प्रज्वलित करें और आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें. I also request respected Principal Sir, Mr. Mohammad Shoaib Sir, to kindly escort our esteemed dignitaries to the stage. Start with something truly divine and meaningful. जी हाँ, किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत मंगल और शुभ भावनाओं के साथ ही होनी चाहिए. तो चलिए अब हम बढ़ते हैं राग के मन पर आधारित सरस्वती वंदना की ओर. That was truly a beautiful Saraswati Vandana. Courage and love for our nation. बिल्कुल, देशभक्ति वो भावना है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है. हमारी पहचान, हमारा सम्मान और हमारा गर्व है हमारा भारत. Patriotism is not just a word, it's the heartbeat of every Indian. It reminds us of the sacrifices, the unity and the undying spirit of our motherland. You know, Alkisa, whenever I hear a patriotic song, I feel a strong wave of emotion, as if every word tells a story, every note salutes our nation. Absolutely, and today's performance is even more special because it's coming straight from the heart of our youngest student.
Their tiny footsteps, their innocent voices, yet their love for the country is no less than ours. सही कहा, इतने छोटे होने के बावजूद भी इन बच्चों ने दिन रात मेहनत की है ताकि ये मंच पर आकर अपने देश के प्रति सम्मान जता सके। And that is what makes this performance so beautiful. Not perfection but pure passion. तो आइए इसी जोश और उत्साह के साथ हम अपने अगले कार्यक्रम का स्वागत करते हैं, जहां हमारे नन्हे कलाकार अपने सुरों के माध्यम से देशभक्ति की शक्ति को जीवित करेंगे। Ladies and gentlemen, their courage to stand here, their excitement to sing, and their love here deserve the loudest applause. So please join us in encouraging them with warm smile and clap, क्योंकि इनका हौसला ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। And now please put your hands together and welcome our talented students as they salute our motherland with their beautiful voice. प्रस्तुत है हमारे नन्हे देशभक्तों का देशभक्ति गीत। Let the spirit of India echo in every heart. वतन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान, चमन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान। वतन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान, चमन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान। मेरे वतन की सरजमीं प्राणों से प्यारी है, इसकी वजह कश्मीर से कन्याकुमारी है। वतन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान, चमन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान। वतन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान, चमन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। पूरब का सूरज जब हो सुख का संदेश सुनाए, पूरब का सूरज जब हो सुख का संदेश सुनाए। उत्तर में है अटल हिमालय, कभी न शीश झुकाए। गंगा माँ का निर्मल झरना, गंगा माँ का निर्मल झरना नित अमृत झलकाए। एक एक से खुले मिले हैं ये जीवन कहलाए। मेरे वतन की सरजमीं प्राणों से प्यारी है, इसकी वजह कश्मीर से कन्याकुमारी है। वतन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान, चमन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान। वतन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान, चमन ये हमारा है प्यारा हिंदुस्तान। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। The spirit of India. बिल्कुल, बच्चों का जोश की आवाज और उन देश प्रेम सब दिल को छू गया। ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल ही तिरंगे के रंगों से भर गया हो। A big round of applause for our young patriots. They made us feel proud.
cute and colorful. You know, childhood is not just about fun, it's also about healthy food. हेल्दी फूड की बात आई तो मुझे याद आया स्कूल कैंटीन में बच्चे सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं. हाँ, I am sure many will say pizza or burgers, but our body loves something more. Vegetables. सही कहा. और वेजिटेबल्स भी कोई बोरिंग चीज नहीं है. अगर इन्हें मजेदार गानों पर नचाया जाए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं. Exactly. Today, our little one will show you how fun, colorful and lively vegetable can be. तो चलिए बातों को यहीं रोकते हैं और अपनी प्यारी सी सब्जियों का स्वागत करते हैं. Presenting the adorable and energetic vegetable dance, a performance that teaches us to eat healthy and stay happy. तो प्लीज वेलकम हमारे नन्हे मुन्ने कैरेट और कैबेज डांसर्स का. Let's chop some carrots, carrots. Na na na. Let's chop some cabbage, cabbage. Na na na. Let's chop some broccoli, broccoli. Na na na. Some vegetables for you and me. Carrot, cabbage, broccoli. Carrot, cabbage, broccoli. Some vegetables for you and me.
हर किसी को भी हेल्दी खाना खाने का मन कर जाए। You are right, Mannat, and today's theme is all about happy childhood, and a happy childhood starts with healthy food. हाँ, क्योंकि healthy food हमें strong बनाता है, active रखता है और हमारी immunity भी बढ़ाता है। And do you know, Mannat, healthy food doesn't mean only boring food. It can be fun, colorful, tasty, and full of हाँ देवांश, बच्चे भी अगर नाचते गाते हेल्दी लाइफस्टाइल सीखे तो सीखना और भी मजेदार हो जाता है। सो नाउ गेट रेडी फॉर अ परफॉर्मेंस दैट सेलिब्रेट्स फिटनेस, फ्रेशनेस एंड फ्लेवर। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी अगली प्रस्तुति का। लेट्स एंजॉय। खान साहब क्या कर रहे हैं? बनवाए लॉन टेनिस का कोर्ट। 1, 2, 3, में ना Fruits and veggies, grains and meat. अमनपुरी में They help you grow, they help you play. They keep you strong every day. Too much junk can slow you down. It might just turn your smile to frown. But water, fruits and meals so clean. Keep your body fit and lean. Eat your colors, red to green. Fill your plate with things that clean. From head to toe, you feel so bright. Healthy foods just feel so right. Milk for bones and carrots for eyes. Eggs and fish to make you wise. Whole grains give you energy to learn to jump and run with glee. Too much junk can slow you down. It might just turn your smile to frown. But water, fruits and meals so clean. Keep your body fit and lean. Eat your colors, red to green. Fill your plate with things that clean. From head to toe, you feel so bright. Healthy foods just feel so right. Eat smart, feel great, and grow so tall. Healthy food helps one and all. A strong heart, a happy mood. It starts with eating healthy food. Eat your colors, red to green. Fill your plate with things that clean. From head to toe, you feel so bright. Healthy foods just feel so right. Eat smart, feel great, and grow so tall. Healthy food helps one and all. A strong heart, a happy mood. Starts with eating healthy food. Our students truly showed us how fun a healthy lifestyle can be. सही कहा देवांश, बच्चों ने तो ये साबित कर दिया कि हेल्दी खाना और हेल्दी रहना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता। इतना ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। Now, after talking so much about healthy food and fitness, there's something else we all must talk about. बिल्कुल रोहन, हेल्दी फूड हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि फास्ट फूड सिर्फ स्वाद के लिए है, सेहत के लिए नहीं। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि फास्ट फूड समटाइम्स ठीक है, but not every day. Exactly. Taste is fun, but health is important, and our next act shows this balance beautifully. So, ladies and gentlemen, after learning the importance of eating right, let's lighten the moments with a performance that is full of fun, colors and cuteness. Yes, the next performance not to promote fast food, but to show that dance, expressions or creativity किसी भी थीम को मजेदार बना सकती है. Because pizza may not be healthy, but today it's just a fun theme. A way for our tiny stars to express joy, rhythm and imagination With cheesy expressions, colorful costumes and toppings full of energy. Our little performers are all set to win your hearts. Please welcome them with a huge round of applause.
eat the pizza dance. ओवन से बाहर आया, मुझे थोड़ा जीने दो। मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगी। आजा 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 आजा, आई बहार दिल है, बेकरारों में, राजकुमार तेरे बिन रहा न जा। आजा, आई बहार दिल है, बेकरारों में, राजकुमार तेरे बिन रहा न जा। मैं तो अब राक्षस बन के रोना चाहता हूँ। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। Sweet and salty, so yummy, but too much is not good for your tummy. Healthy food and avoid junk food. Healthy food, who are you? I am the one that is good for you. I make you grow tall and strong and give you energy all day long. Junk food, who are you? I am the one that is bad for you. I make you weak and very sick. You become lazy and you no more wake. Hey kids, it's time to stop eating unhealthy food. Too much sugar is bad for you. Don't make me call the healthy food police. Are you ready to make some changes? Stop eating that, stop eating that. Sugary food. Stop eating that, stop eating that. Fatty food. It's bad for you, it's bad for you. Sugary food. It's bad for you, it's bad for you. Fatty food. Too much sugar is bad for you. Too much sugar is bad for you. Cake, soda, and lollipops too. Cake, soda, and lollipops too. Milk and dairy are good for you. Milk and dairy are good for you. I like cheese and yogurt too. I like cheese and yogurt too. Meat and fish are good for you. Start eating healthy food. Bread and cereal are good for you. Start eating healthy food. Eating that, stop eating that. Sugary food. Stop eating that, stop eating that. Fatty food. It's bad for you, it's bad for you. Sugary food. It's bad for you, it's bad for you. Fatty food. Give a big round of joy. And now, it is my honor to invite our respected Principal Sir, Mr. Muhammad Shoaib Sir, to kindly come on stage and address the gathering. Sir, your words always guide, inspire, and strengthen us. We request you to share a few words of wisdom with all of us. Teachers, my beloved Smartians, today I am here and I am feeling pride to welcome you all to the annual function of Sims Primary Wing. Today is a day of joy, celebration, reflection, and pride. Annual Day is not just a cultural event, it is a mirror that reflects our school's vision, discipline, value, and achievements. It is a day when every parent witnesses the confidence, creativity, and hidden potential of their child. The theme of this year's annual day is Happy Childhood. Childhood is the most prestigious age of the person.
A time when imagination knows no boundaries, when learning happens through curiosity, and when every experience leaves a lifelong imprint. Through today's performance, you will witness the happy habits and lifestyle choices, the contrast between old and new generations, mobile addiction and responsible use of technology, the innocence, joy, and purity of childhood. The academic years has been extremely productive for the Smartians. Our students have excelled not only in academics, but in sports, arts, cultural events, and Olympiads. The teacher worked hard every single day with the students. They introduced new systems in the school, and the spirit of teamwork among staff has grown stronger. These achievements are the result of consistent efforts of parents, teachers, and Smartians. I want to take a moment to appreciate our teachers who work really hard with the students every single day and night for this event also. And my dear Smartians, you are the heart of SIMS. Today, as you perform on the stage, remember, confidence your strength, discipline is your identity, hard work is your path, and values are your foundation. Always be proud who you are, chase your dream, respect your teachers, and remain humble in every situation, and strong in every challenges. Before I conclude, I extend my heartfelt gratitude to the organizing team, teachers, supporting staffs, and volunteers, and of course, Smartians who work really hard for this event. Your teamwork reflects the true spirit of SIMS. I once again welcome you all. Please sit back, relax, and enjoy the evening filled with creativity, learning, and vibrant spirit of our Smartians. Thank you so much. Jai Hind. Thank applause as we are going to begin the felicitation ceremony. Before announcing the names, we would like to call the pillars who make every achievement possible. We humbly call upon our respected Director Sir, Mr. Sharad Gupta Sir, our respected co-founder, Engineer Saurabh Gupta Sir, our respected Deputy Director Ma'am, Mrs. Manjari Gupta Ma'am. Along with them, we warmly invite our esteemed guest of honor, Mr. Amit Jain Sir, to the stage. 8. Rajkumar from class 11. Next we have the girls under 19 from class 7, Shrishti from class 9, Priya from class...
Congratulations, girls. Next, we have the girls under 14 hockey team that won the bronze medal. Congratulations to all the achievers. Next, we have our girls football team who participated with great energy. Congratulations, girls. Next, we have our girls football team who won bronze medal and gave their best in the CBSE cluster football tournament which was held in Bagpat. And the team members are Sandhya from class 10, Adrika from class 10, Kalpana from class 11, Vanshika from class 9, Avni from class 8, Malika from class 9, Nikunj from class 9, Khushi from class 12, Preeti from class 9, Divya from class 8, Ankita from class 10, Ashmeet from class 7, and Radhika from class 7. CBSE National Athletics Championship and won bronze medal which took place in Banaras. Next, we honor our Scholar Blazer students whose consistent efforts. Khushi Yadav
from class 9, Piyush Gangwar from class 10, Siddharth Gupta from class 11, and Sandeep from class 12. Our class 10 both toppers are Siddharth Gupta, Aradhya, Aanchal, Sumit, and Iram. Lastly, we have Himang, Rehan, Suyash, Kashif, Asfahan, Ilma, Faisal, and Piyush. Let's give all our achievers a huge round of applause. That was truly a proud moment as we celebrated the efforts and achievements of our talented students. The dignitaries who are here, I am really feeling proud to see this moment. I have seen this school step by step. मेरी फैक्ट्री है सामने, and I used to visit this place oftenly, maybe weekly, sometime on a daily basis also. मैंने देखा ये स्कूल कैसे एक ईंट से ईंट बड़ा है. पहले स्टूडेंट से लेके आज 1000 स्टूडेंट हो गए हैं. आई एम रियली प्राउड कि ऐसा स्कूल जो रामपुर से इतनी दूर है लेकिन शायद आज रामपुर में सबसे आगे है. इतने बच्चे स्पोर्ट्स में, इतने बच्चों के बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स, दे आर द टॉपर. मुझे बड़ी प्राउड फीलिंग हो रही है जो गुप्ता साहब ने आज यहाँ कर दिखाया है. रियली ये अप्रिशिएबल है, हाईली अप्रिशिएबल है. इसको और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. मेरे ख्याल से ये चीजें पता होनी चाहिए कि इन्होंने अपने केवल एक बड़े विजन से, जब ये यहाँ पे आए थे तो मैंने इनसे बोला सर बहुत अंदर स्कूल लगा रहे हो आप, कैसे करोगे, बट इनका उत्साह, इनका डिटर्मिनेशन आज ये है जो आज यहाँ हाउसफुल भीड़ है और बच्चों के चेहरे ऐसे बता रहे हैं कि रियली वो अपने टीचर्स को, अपने गुरु को, अपने प्रिंसिपल को
जिस रेस्पेक्ट से देख रहे हैं, ये शायद इस स्कूल की कमाई है और गुप्ता साहब की कमाई है। मैं आज यहाँ इन बच्चों से मिलकर मुझे खुद अपना स्कूल टाइम याद आता है, जब स्पोर्ट्स में आगे आना, प्राइज जीतना बहुत बड़ी बात होती थी। मैंने आपके कई स्कूल के जो टूर्नामेंट हुए उसमें भी मैं आया हूँ, कैसे सर ने मेहनत करी है, एक एक बच्चे के पीछे ट्रेनिंग करना, बच्चों का डेडिकेशन करना, शाम की ट्रेनिंग करना बहुत बड़ी बात है। और आज ये स्कूल जिस ऊंचाइयों पे जा रहा है, मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है जहाँ इस स्कूल का रामपुर में ही नहीं, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, इस पूरे राज्य में सबसे बड़ा नाम होगा। और आप ही बच्चे, जो बच्चे आज यहाँ से निकल रहे हैं, एक दिन इन्हीं बच्चों में से आईएएस, सीनियर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएम्स, मे बी आईआईटी, आई डोंट नो कहाँ पे जाके इस देश का, इस रामपुर का, इस स्कूल का नाम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतने सारे टीचर्स एंड अभिभावक, बच्चे यहाँ बैठे हैं। इस स्कूल में जो कोई भी आ रहा है वो इस सोच से आए कि ये एक विजन दे रहे हैं आपको। ये विजन जो बच्चे यहाँ से लेके जाते हैं, वो एक दिन उस सफलता को चुनेंगे, वो डेफिनेटली किसी कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे, किसी पोस्ट पे जाएंगे, किसी आईएएस बनेंगे। और ऐसा हुआ है, यहाँ की एक बच्ची ने जिसने टॉप किया था, वो एक दिन के लिए डीएम भी बनी थी। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट है और इस सब का पूरा क्रेडिट यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के फाउंडर्स को, यहाँ के प्रिंसिपल को जाता है। और मैं आगे भी ये कामना करता हूँ, इसी तरीके से आप इस स्कूल को बढ़ाएं, इसके मल्टीपल विंग खोलें, जिससे यहाँ के आसपास के बच्चों का और भविष्य सिक्योर हो, वो और अच्छी पोस्ट पे जाएं और बड़े टूर्नामेंट जीतें, नेशनल में टीम में जाएं, इवन इंटरनेशनल टीम्स में भी अब रामपुर का नाम करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your valuable words. And now, with great respect, I would like to invite our Honorable Director, sir, Mr. Sharad Gupta, sir, to please come forward and bless us with his inspiring thoughts. कट करिए, एक मिनट। भाई कट करो, कट करो, कट करो, कट करो। सही है। Bright smiles, I am reminded of a beautiful line I once read. Children are not things to be molded, but people to be unfolded. This evening is the unfolding of a whole year's love, laughter, hard work and growth. To our dearest parents, thank you for trusting us with your most precious treasure, your child. Every morning when you hand over those little fingers at the school gate, you are giving us the greatest responsibility and the greatest honor. Today, as you watch your child dance, recite, act, or simply wave at you from the stage, remember, this confidence, this sparkle in their eyes is built brick by brick every single day in our classroom and our corridors. To my amazing teachers and the primary KG wing staff members, you are real magician. You wipe tears, tie shoelaces, listen to endless stories, turn mistakes into lessons, and fears into courage. You sing Twinkle, Twinkle 1,000 times and still smile. You are the reason a child who cried on the first day of KG is today standing tall on this stage. I salute each one of you from the bottom of my heart. To my little champs on stage and off stage, do you know you are my superheroes? The way you waited patiently for your turn today, that is discipline. The way you clapped your friends, that is kindness. The way you tried again when you forgot a step or a line, that is courage. These are the real trophies of life, much bigger than any medal. This year,
our tiny tots learn to hold a pencil, write their first A for apple, tie their shoelaces, share toys, and say sorry and mean it. Plant seeds and watch them grow, and most importantly, they learn that they are loved exactly as they are. I want to share a small secret with you all. 25 years ago, when I started teaching, I thought my job was to teach children. Today, after seeing thousands of children, I know that my real job, our real job, is to help every child discover three magic. We will always keep your childhood joyful and pressure-free. Number 2, we will teach values before marks, kindness before competition. We will make sure that when you look back at your school days, you will smile and say, those were the best days of my life. So now, with these words, I conclude my speech. Let the little star shine brighter than ever before. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much to you all. God bless you all. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable words of encouragement and insight. We are deeply honored to welcome the Principal and Director of Radiant School, along with that, Mr. Shobit Gupta, who is a social worker, and Mrs. Naina Kakkar, a classical dancer.